Jalan pare. Yeah. Thank you.
just follow. पूरा शाम किया है खोल के रखी White for peace and purity. चौथे की भी शक्कर देते हैं तत्व भी कर देते हैं ठीक है और थोड़ा सा चौथे भी करते हैं तर्पण सभी का तर्पण कराने बैठ सकते हैं सुनो ये तो सब कुछ अच्छा है we can sit down they can sit down on the floor सब तो लेकर ही आता है अच्छा बेटी अच्छा you have to be like this आनभद्रागर्भयन्तो सतो लब्धासो अपरिजासौर्मिदः देवानो यथा सद्विन्दवृद्धैन् प्रसन्नप्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे Just sit up like this. Yes. You are the sun, right? मिलता है इतना अच्छा ये मिलता है इतना अच्छा सब कुछ बंद हो जाएगा मुझे पता है सीजर का ओह मेरे पास
that's good. करने देते हैं यही अच्छी बात है। क्योंकि अभी नहीं, ये लास्ट में मैं बताऊँ सब कुछ, ठीक है। सप्त जन्म कुटुंब पापम रक्षयति सिद्धि 1 2 3 4 5 6 7 Lord, we help you, and Mother can give you an insight. ओम अद्यहम काश्यप पुत्र उत्पन्नेन मम आपका नाम चंद्र, आपका बोलने का है मम आत्मन श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति हेतवे मम एवं मम सकुटुम्बस्य आयुकर्ता पुष्टिकर्ता निर्विघ्नकर्ता वरदाख्य मम पितॄणां ठाकुर भाई बेहुत्सर्गेण विष्णु प्रत्यागमन हेतु वैकुंठ लोकस्य गौलोक सेवा निमित्ताख्येन देव ऋषि दिव्य मनुष्य तर्पण महम चतुर्षि ऐसा आपको जल देना आवाह्य विश्वे देवाः सुरगातां मनुष्यितां विश्वे देवाः सुरतं आवाह्ये आगच्छतु महाभागा विश्वदेवा महाबला तर्पणेन विहितां सावधान भवन्तु मे लिखा है ओम भवाम इसको देखा कंटिन्यू योर में ड्रॉप होता है। ओम ब्रह्मा सुपिताम ओम विष्णु स्तुतिताम ओम रुद्र स्तुतिताम ओम प्रजापति स्तुतिताम ओम देवा स्तुतिताम ओम सन्यासी स्तुतिताम ओम वेदा स्तुतिताम ओम ऋषि स्तुतिताम ओम पुराणाचार्य स्तुतिताम ओम गंधर्व स्तुतिताम ओम मित्राचार्य स्तुतिताम ओम सहस्र स्तुतिताम ओम देवी स्तुतिताम ओम अप्सरा स्तुतिताम ओम देवानुका स्तुतिताम ओम सागरा स्तुतिताम ओम पार्वता स्तुतिताम ओम सरिता स्तुतिताम ओम मनुष्य स्तुतिताम ओम यक्षा स्तुतिताम ओम रक्षा स्तुतिताम ओम विशाखा स्तुतिताम ओम सुपर्णा स्तुतिताम ओम भूतान स्तुतिताम ओम पशु स्तुतिताम ओम वनस्पति स्तुतिताम ओम औषधि स्तुतिताम ओम भूति ग्राम चतुर्विध स्तुतिताम। ऐसा बस ये रखना है। ज्योतिरानी क्षेत्र ऋषि तर्पणाख्येन ज्योतिरानी क्षेत्रेण ओम मरीचि स्तुतिताम ओम अत्रि स्तुतिताम ओम अंगिरा स्तुतिताम ओम पुलस्सु स्तुतिताम ओम पुलहस्तु स्तुतिताम ओम क्रतु स्तुतिताम ओम प्रचिता स्तुतिताम ओम
वशिष्ठ सुपिताम, ओम भृगु सुपिताम, ओम नारद सुपिताम जल गंगोजलेन, ओम सनक सुपिताम, ओम सनक सुपिताम, ओम शरंद सुपिताम, ओम शरंद सुपिताम, ओम सनातन सुपिताम, ओम सनातन सुपिताम, ओम कपिल सुपिताम, ओम कपिल सुपिताम, ओम आसुरी सुपिताम, ओम आसुरी सुपिताम, ओम बोलो सुपिताम, ओम बोलो सुपिताम, ओम पंचशिखा सुपिताम, ओम पंचशिखा सुपिताम ओम कव्यातुत्याइदम सतिरम गंगोजलेन तस्मै सुधाय नमः। ओम कव्यातुत्याइदम सतिरम गंगोजलेन तस्मै सुधाय नमः। ओम सोमपासुत्याइदम सतिरम गंगोजलेन तस्मै सुधाय नमः। ओम सोमसुत्याइदम सतिरम गंगोजलेन तस्मै सुधाय नमः। ओम यमसुत्याइदम सतिरम गंगोजलेन तस्मै सुधाय नमः। ओम यमसुत्याइदम सतिरम गंगोजलेन तस्मै सुधाय नमः। ओम अरिवासुत्याइदम सतिरम गंगोजलेन तस्मै सुधाय नमः। ओम अरिवासुत्याइदम सतिरम गंगोजलेन तस्मै सुधाय नमः। ओम अग्निश्वाता पितृ सुत्याइदम सतिरम गंगोजलेन तस्मै सुधाय नमः। ओम अग्निश्वाता पितृ सुत्यामिदम सतिरम गंगोजलेन तस्मै सुधाय नमः। ओम सोमपा पितृ सुत्याइदम सतिरम गंगोजलेन तस्मै सुधाय नमः। ओम सोमपा पितृ सुत्याइदम सतिरम गंगोजलेन तस्मै सुधाय नमः। ओम वैष्णव पितृ सुत्याइदम सतिरम गंगोजलेन तस्मै सुधाय नमः। Why we use the sesame? क्या सिंसियर है पता नहीं, ये थोड़ा सा आपको हम डालते हैं और जमीन पर तो उनका बड़ा हो सकता है और उनकी ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरे वृक्ष की तरह ऑयल होता है इसलिए हमारे हम प्रार्थना करते हैं उनको कि आपके साथ जो हमने देवों का, ऋषियों का, सभी का जो आह्वान किया है, तो उस सभी को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे कुटुंब की, हमारे ऑल द फैमिलीज कि हमारी वृद्धि हो, वृद्धि हो। इतना तो है, मैंने संकल्प में बोला, आयु करता, पुष्टि करता और तुष्टि करता। हमें आयु तो करे लेकिन उनको पुष्ट करे और तुष्ट करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। इसीलिए तेल है और यह from the root or the top of the everything has to be you can use and this will produce some harm. That's why gel. इसीलिए हम अक्सर बोलते हैं we have to be surrendered to God for health, wealth, prosperity and happiness. पता चलना चाहिए। हाँ, चलो डायरेक्ट you have to be go गंगाजल। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम ऋत्वे नमः, ओम ऋत्वे नमः, ओम ऋत्वे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम व्यवसताय नमः, ओम व्यवसताय नमः, ओम व्यवसताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वदक्षाय नमः, ओम सर्वदक्षाय नमः, ओम सर्वदक्षाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दद्दाय नमः, ओम दद्दाय नमः, ओम दद्दाय नमः, ओम लीलाय नमः, ओम लीलाय नमः, ओम लीलाय नमः, ओम परमेश्वर नमः, ओम परमेश्वर नमः, ओम परमेश्वर नमः, ओम रूपोदराय नमः, ओम रूपोदराय नमः, ओम रूपोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। एक चमक दे दो। उषंत्वा ऋषिद अंसमुदेशीम, उषंत्वा आहवन पितृन भविष्य है। उनके आत्मा को हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा जो प्रयाण है वो सभी समुद्र तट सभी से ऊपर जाके हमारे के चरणों में उनका स्थान हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ओम तत्वद्याम काश्यप गोत्रोत्पन्नेन अस्मत् पिता पिता का नाम गोविंद कुमार सर्वम वसुरूप स्तुत्याइदम जलम तस्मै सुधाय नमः, इदम जलम तस्मै सुधाय नमः, इदम जलम तस्मै सुधाय नमः। आपके ग्रैंडफादर का नाम आपके मन में बोलना, कोई बात नहीं। ओम तस्मद्याम काश्यप गोत्रोत्पन्नेन अस्मत् पितामह, ये जो है ग्रैंडफादर रेणुमल। ओके। रुद्र रूप इदम जलम तस्मै सुधाय नमः 3 बार। इदम जलम तस्मै सुधाय नमः, इदम जलम तस्मै सुधाय नमः। ओम तस्मद्या काश्यप गोत्रोत्पन्नेन पितामह परदादा, फादर के ग्रैंडफादर, आदित्य रूप इदम जलम तस्मै सुधाय नमः, इदम तस्मै सुधाय नमः, इदम तस्मै सुधाय नमः। मम्मी मदर है। ओम तस्मद्या काश्यप गोत्रोत्पन्नेन माता ज्योति।
ज्योति देवी वसरूप ये मैं चौथा का कर रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ओम तस्मद काश्यप पुत्र पुनस्पत प्रपिता में ही ग्रैंड मदर परमेश्वर रुद्रपाय इदम तस्वशदाय नो इदम तस्वशदाय नो इदम तस्वशदाय नो काश्यप पुत्र आदित्य रूपाय इदम तस्वशदाय नो इदम तस्वशदाय नो इदम तस्वशदाय नो ओम उदयातम काश्यप पुत्र सुमाशो दितापिता आवेशम आंगिर सुना पितरो सुम्याशो विसिता पितरो सौम्येशम आयंतुल पितरा सौम्याशो अग्निपति पृथ्वी अग्नि अस्मिन् अग्नि सदा ओम विहानम ऊर्ज बहन्ति दुतम पयक्रियालम परिसुत्तम पितृभ्य स्वादिभ्य सुदाय नमः पितामहेभ्य स्वादिभ्य सुदाय नमः प्रपितामहेभ्य स्वादिभ्य सुदाय नमः ओम अक्षन पितरो नैनी मित्रों पितरो सिद्धार्थ दुवन नम ये चे पितरो बस ठीक है ये और ऐसा कर दिया राइट है ओम ये चे पितरो ये न तेदावितान न विष्टान न विष्टान सुकृते ओम मधुवातार उदयते मधुक्षंति सिद्धो मार्जिनो संतिनो देवाः मधुरुक्त मधुवसु जिम्बाबु लिखा है ओम मधु 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 तृप्तद्यम 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 ओम नमो पितृरसाय नमो पितृसुषाय नमो पितृजीवाय नमो पितृसुदाय नमो पितृमन्नवे नमो पितृगुणान पितृ तर्येन पितृआसः ओम you know about your mother's side, father's mother's name, मम्मी का फादर हो, मम्मी का फादर का पता है। हम तस्मद्याम खुला कर दीजिए, ऐसे ही करो, कोई बात नहीं। ओम तस्मद्याम काश्यप पुत्र माता मम्मी का फादर तोलाराम 3 बार इदम जल तस्मै सुदाय नमः इदम तस्मै सुदाय नमः इदम तस्मै सुदाय नमः जल दीजिए, तो रूबी का है। मम्मी के मदर का परमेश्वरी तस्मद्यम काश्यप पुत्र पुण्यस्पत माता मही परमेश्वरी इदम जल तस्मै सुदाय नमः इदम तस्मै सुदाय नमः इदम तस्मै सुदाय नमः देवासुरासता यक्षनागा गंधर्व राक्षस पिशाचा मुनिकाशिद्धाम कुष्मांडा प्रसिद्धाम जलित्रा मुनित्रा वायस्थितिरा तुप्तिम पेरिमाया तुमया दत्तेन वायनम ते नरकेषु समस्य जातस्तेस्ताम तेषां हम समुद्रता शैलमया तेषां यत् सुदैतन सर्वतुप्तिमाया तुमया दत्तेन वायनम ते सर्वतुप्तिमाया वायना यते अस्माकि कुले जाता पुत्रमुता ते विष्णुवस्त्र निश्चयोदकमहम ओम वैग्राय पद्गुत्राय सर्वला परायचम गंगा पुत्राय भीष्माय प्रदाश्चेनम तंगोदकेन बहन जी वैग्राय पद्गुत्राय सर्वला परायचम गंगा पुत्राय भीष्माय प्रदाश्चेनम गंगोदकेन उसमें लगा दीजिए सब कुछ। यस और ये जल भी ओम ब्रह्म जगलाम पुरस्तासी चक्षुरातम तेजम ओम ब्रह्मणे नमः ओम विष्णु चक्र में त्रिदानि देव सबल सपाम स्वाहा ओम विष्णवे नमः ओम नमस्ते रुद्रमनुतो बाहुभ्याम ते नमः ओम रुद्राय नमः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम सविताराय नमः मित्रस्य वर्णस्य देवस्य धूमेन जातिं ओम मित्राय नमः जी 6 चट
विष्णु चक्र में त्रिधारी समूल पांगुम स्वाहा। ओम अद्यहम काश्यप पुत्रोत्पन्नेन मम पितुः मृत्यु स्थाने अत्रावजनेन मादिते तो प्रतिष्ठाम। ऐसे ऐसे कंटिन्यू रखना है। ये चट उनको चट कहा जाता है। वहाँ रख दीजिए कॉर्नर पर सेकंड नहीं, मैं बोलूँ उस बाद में बोलना रखने का है। ओम अद्य हम तोड़ना है नहीं, ऐसे ही ऐसे ऐसे आ जाता है। ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 उनको चट कहा जाता है। हम लड्डू भी रख सकते हैं। हम जो आता है, मैंने बुलाया था कि उसमें लिस्ट में था राइस फ्लोर ना, ठीक है। ये उनको चट कहा जाता है उनको भी। काश्यप पुत्रोत्पन्नेन मम पितुः गृह द्वारे अंतिक नामना एष पिंड मायादीते तो उपदिष्टाम। ये है बहुत अच्छी बात है। काश्यप गोत्रोत्पन्ने मह पितुः चतुष्पक्षे खेचर नामना एष पिंड मायादीते तो उपदिष्टाम। पंचम अद्य काश्यप गोत्रोत्पन्नेन मम पितुः विश्रामे भूत नामनी एष पिंड स्थाने ओम अद्य काश्यप गोत्रोत्पन्नेन मम पितुः विश्राम स्थाने भूत नामना एष पिंड मायादीते तो प्रतिष्ठाम। ओम अद्य श्मशान श्वा कैलाशमरहर पिशाचात् सचरा हे तवे साधक नामना एष पिंड मायादीते तो प्रतिष्ठाम। सामने और फिर ओम अद्य कृत्वा कृतसदे जाता प्राप्त जानता मृत्यु कालमुष्ट प्राप्त नरम पंचत्वेन आगतः। ये चट इसलिए रखा है कि पहला है उनके जो संस्थान है उनके नीचे रखना है। बाद में जो उनकी मनोचित कामना है ये सब उसमें आ जाएगी। दूसरा है आपके जो गुरुद्वार है वहाँ घर पे महाराष्ट्र में, तो उसमें वहाँ पे कितनी उनके पूजा की होगी, वास्तु का संकेत किया होगा। वो सभी देवताओं को प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को आप उनको प्रयाण करने में सरलता दें। तीसरा आपके जो आउट ऑफ द डोर बाहर घर के बाहर चौराहा है उनके पर विश्राम है, हमें प्रार्थना करते हैं कि उसमें हम सभी को जो वहाँ तो हम आपका वही रिवाज है कि हम कुत्ते के लिए और सभी के लिए गाय के लिए सब खाना रखते हैं। तो सभी रखते होंगे तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। बाद में श्मशान क्रीड़ा, श्मशान जब आता है नजदीक तो हम उनको मटकी को फोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होता है तो हम पूरा वहीं रख देते हैं। तो ये हमारे विश्राम तो भूत नामना कि भूत प्रेत आदि ईशाच आदि कोई भी ऐसा अनिष्ट तत्व उनकी आत्मा को अनुगत न करे, उनकी आत्मा को संपूर्ण उनके विश्राम स्थान तक पहुँचे, इसलिए हमें विश्राम में भूत नामना इस पिंड। और बाद में जो रखा है सामने वो श्मशान हम शिव जी को याद करते हैं। त्र्यंबक्यम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। और शिव जी को प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को श्मशान तक ले आए हैं। और बाद में आपकी जिम्मेदारी और चित्रगुप्त को हम प्रार्थना करते हैं कि उनका लेखा जोखा जो है उनको समन्वय करके उनको साधक बनाकर आप अपने खुद में रखें। और बाद में हम कविवाद वाहन नाम का अग्नि को हम आमंत्रित करेंगे और इसीलिए हमने ये दीप प्राकट्य करते हैं। बाद में हम उनको आहुति देते हैं उनके सभी अंगों की, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपके जो पार्थिव शरीर है उनको पंच तत्व में विलीन होने के लिए हम आपकी अनुमति चाहते हैं।
उनकी अनुमति तो चाहिए। और उनके 17 दिन तक उनकी आत्मा अभी सभी लोगों के परस्पर रहती है, तो उनको भी इसका जब होता है कि अच्छा मैं कर देता हूँ, तो इसीलिए ये अंतिम है। तो उनको या तिल लीजिए और तुलसी दल लीजिए, आप भी ले सकते हो। कृत्वा कृत्व सिद्ध कृत्वा कर्म जानता व्याप्त जानता मृत्यु काल वंशम प्राप्तम नरम पंचतत्वेन आगतम धर्म धर्म समायुक्तम लोभ मोह समावृतम देहेम सर्वगात्राणि दिव्यान लोका सगच्छतु। ओम त्र्यंबक्यम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 3 बार बोलने का। ओम त्र्यंबक्यम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबक्यम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ठीक है, उनको प्राकृतिक कीजिए। यम और तिल से आपको ऐसा लेना है, मिक्स कर देता हूँ। तिल यहाँ जो उड़ेगा ऐसा दो करेंगे तो भी चलेगा। ऐसा स्वाहा बोलता आप उनको स्पर्श कर सकते हैं। You are okay? Yeah. We have otherwise you see. No, it's fine. If you want. I'm good. ओम रोमेम्य स्वाहा, ओम त्वचे स्वाहा, ओम लोहिताय स्वाहा, ओम मेदेभ्य स्वाहा, ओम मासेभ्य स्वाहा, ओम स्नायुभ्य स्वाहा, ओम अस्थिभ्य स्वाहा, ओम मज्जाभ्य स्वाहा, ओम रेतसे स्वाहा, ओम पायसे स्वाहा, ओम आयासाय स्वाहा, ओम प्रायासाय स्वाहा, ओम संयासाय स्वाहा, ओम व्यासाय स्वाहा, ओम उद्यासाय स्वाहा, ओम शुचे स्वाहा, ओम शोचिते स्वाहा, ओम शोचमालाय स्वाहा, ओम शोकाय स्वाहा, ओम तप्चे स्वाहा, ओम तप्यते स्वाहा, ओम तप्यमालाय स्वाहा, ओम तप्त्याय स्वाहा, ओम धर्माय स्वाहा, ओम निष्कृते स्वाहा, ओम प्रायश्चिते स्वाहा, ओम भेषजाय स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, ओम अंधकाय स्वाहा, ओम ऋत्वे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ब्रह्मत्याय स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, ओम दह पृथिव्याम स्वाहा। ओम कविवादेहि मनवाम प्रहोमि उदर्श्येन यमराज गच्छुतहं रिप्रवाग वहि वाहि हरिमी जात्वेदा देणाभ्यो हव्यं वहन्तु प्रजाननम्। ओम कृव्येदादि दाहि नमोस्तुभ्यं। प्रथमं काष्ठे अग्ने स्वाहा। हम यम को बोलते थे, प्रार्थना करते हैं कि आप तो यमुना के भाई हैं, तो आप उनको छोड़ दीजिए और आप उनको हमें शिव जी के प्रयाण में शिवलोक प्रयाणास्तु देखा को सहस्त्र योजने मदनमानी तन्मसी। और वहाँ जाके हमारे सर्व जो पितृगण है और पितरों को देवों मानकर हम दिव्य मनुष्य तर्पण किया। दिव्य लोक में जो है वहाँ उसके साथ रहकर हमें सभी को हम आशीष प्रदान करें। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण शरणं मम। श्रीमद्भगवद्गीता 12 अध्याय भक्ति योगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योतेतास्ते ते युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरं निर्दर्शम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्त्यं च
कुटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियमेद ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयम ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरताहम क्लेशो अधिकरस्तेषाम् अव्यक्ता अशक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुःखम देववद् विरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्तमत्परः अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्रता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशयम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि क्षान्तुं धनञ्जयम् अभ्यासेऽपि समर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथेतदप्तशक्तोषि कर्तुमद्योगमाश्रितं सर्वकर्मधर्मफलत्यागं ततः कुरु एतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्त्यनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सत्यम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयर्पि तमनोर्बुद्धि यो मद्भक्त समय प्रियम यस्मान्नो द्वितीय लोकम लोकान्नो द्वितीय क्षयम हर्षम हर्षभोद्वेगे मुक्तो यच समय प्रियम अनपेक्ष शुचिर्दक्षम उदासीनो गतव्यथम सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रियम यो न दृष्टन्ति न दृष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानी असमय प्रियम समशत्रुत मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितम तुल्य निंदास्तु निर्मोनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमर्ति भक्तिमान में प्रियो नः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्ते तिमे प्रियः ओम तत्समदुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः श्रीमद्भगवद्गीता पंचदशोऽध्याय पुरुषोत्तम योगः भगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमधुशाखम् अश्वस्थं प्राहुरव्यं छन्दांसि हस्तपर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अदर्शश्रोत्वस्य प्रसुतास्य शाखां गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालम् अधस्तमूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादी न च सम्प्रतिष्ठम् अश्वस्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तयोति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्माणमोहा जितसंगदोषाम् अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकाम् द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर् गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यदत्वा न निवर्तन्ते तद्माम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनं मनश्चानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चात्युक्रामतीश्वरं गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धानि वास्यात् यदादित्य घृतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो ते तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसां पुष्पाणि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकम् अथ वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं प्राणापान समायुक्त पचा अन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेश्च सर्वे हरमेव वेद्यो वेदान्तकृतं वेद वेदेव चाहं द्राविमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषत्वन्यं परमात्मेतुदावृतं यो लोकतयमाविश्य विवृत्येन ईश्वरम् अत्पाक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमम् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमं यो मामेव शम्भुरो जानाति पुरुषोत्तमं स सरिद्भजति मां सर्वभावेन भारतम् इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नतम् एतद्बुद्धा बुद्धिमानुष्यात् कृतकृत्यस्य भारतम्
ओम तत्सत् श्रीमद् ब्रह्म विद्यायां शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरि ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वं नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्ववेदेव पुरुषत्वदिजमुच्यैक जीवति पतिं विश्वात्मात् परमेश्वरं शाश्वतं शिवमुच्चितं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योति आत्मा नारायण परम नारायण परम ब्रह्म तत्व नारायण परम नारायण परो ध्यात्वा ध्यानं नारायण परम यत्किंचित् जगत् सर्व दृष्टे सुते पिवाम अंतर्बहिषि तत्सर्वं व्याप्त नारायण स्थितिः अंतर्बहिषि यत् कविं समुद्रे तेन विश्वशंभुवं पद्मकोश पद्महृदयं चाप्य द्योमुखत् अधो निश्चात्यार्निश्चार्षीं नाभ्यामुपरि तिष्ठतिं ज्वालामलाकुलम्भाति विश्वात्यारिं महत् सततं शिलामिस्तुं लम्ब्याख्यादुर्दीर्घनं तस्य स्थाने रुद्रम सूक्ष्मं तस्मिन् ते ईशानं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महा अग्नि विश्वतो मुखः तोषितवद्यानर्थं एतानि कविं तस्य ज्ञानसंस्थिताहम् ओम संतापयति सर्वदेव पादतलमस्तकं स्वदेशे बहिर्शिरा अणुयोत्यन्यवस्थिताम् शांति नमो सहस्त्राय सहस्त्रमूर्धये सहस्त्रपादाय विष्णुभावे सहस्त्रनाम्नि पुरुषाय सहस्त्राय सहस्त्रकोटि विधाय नमः। ओम त्र्यंबक्यं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ऐसा करना है। ये उशीर लेना, उशीर कहा जाता है चंदन में। ओम त्रायुखम जमदग्ने, यहाँ से यहाँ का ओम त्रायुखम जमदग्ने ऐसा करके ऐसा। ओम त्र्यंबक्यम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, बीच में कुमकुम से टीका करने का। ओम त्र्यंबक्यम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् तुलसी हम रूपाम च बीजरूपाम च मंजरीम हरिप्रियाम मोक्षप्रदाम। मुख में गंगे से यमुने व गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु तुलसी पदारिणी योग। ठीक है, और उसी से यहाँ यू हैव टू बी ड्रॉ द स्टार, ऐसे करके स्टार बनाना है। ओम श्री सत्य, यस जो ज्यादा लेना पड़ेगा। श्री सत्य लक्ष्मी पत्यवरांति पार्श्व नक्षत्राणि व्याप्तम ईशान्य खाणम मुंबई खाण सर्वलोकम ईशानम या श्री स्वयं सुखदीनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतदीयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभोशलज्जां तां तानतास्म परिपाह लय देवी विश्वम किं वर्णयाम तव रूपम किंच मे तत् किंचाति वीर्यम अक्षरक्षयकारी भूरि किंचाहवेषु चरिताद तवाद्भुतानि सर्वेषु देव सुरदेव गणाधिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषे नग्नायशे हरिहरा दिव्यप्यपारां सर्वाश्रया अखिलमिदं जगदंशभूतं मव्याकृता हि परमा प्रकृति समाध्यात्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः। नमः प्रकृतिं भद्राय नियतां प्रणता स्मृतातः हृदयारविन्देन। White for peace and purity, pink for happiness, orange for prosperity, turmeric antibiotic for health, and kumkum for activation and power. हम ये लक्ष्मी जी को आह्वान करते हैं कि उनके हृदय में आपके माता जी के साथ लक्ष्मी नारायण के रूप में उनका वहाँ स्थान हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं।
हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्त्रां चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जात वेदो म आवह। मुख में लिखा है। यस यस। ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम जन ओम तप ओम आतप, ये है ना, दोनों आ जाइए। दादाजी को उनको टीका करो यार, चिल्ले तो। ये कुमकुम से टीका करो। ओम त्र्यंबक्यम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयं मामृतात्। गंगेश्च यमुनेश्च व गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। 7 बार करने का है ऐसे। गंगेश्च ओम भूस्वा ओम भुवस्वा ओम स्वस्वा ओम जनस्वा ओम तपस्वाहा ओम भूस्वा ओम भुवस्वा ओम स्वस्वा ओम जनस्वा ओम तपस्वाहा ओम भूस्वा ओम भुवस्वा ओम स्वस्वा ओम जनस्वा ओम तपस्वाहा ओम भूस्वा ओम भुवस्वा ओम स्वस्वा ओम जनस्वा ओम तपस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम जनस्वाहा ओम तपस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम जनस्वाहा ओम तपस्वाहा ओम गंगेश्च यमुनेश्च व गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। वो साल ले आइए, वो साल है। रामो राजमतिं सदा विजयतिं रामो रमेशं भजेत् रामाणां चरितार्थान् सफला रामो रमेशं भजेत्। ओम त्र्यंबक्यं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। और खा लेने जाइए। रामो राजमतिं सदा विजयते रामो रमेशं भजेत् रामाणां चरितार्थान् सफला रामो रमेशं भजेत्। स्वस्ति न इंद्रो हृदु सवाहा स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः स्वस्ति नस्तान् रक्षो अरिष्टनेब्रहीं स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। Now everybody can sprinkle all the color, make him colorful. Don't cry, okay? And his path is go to peacefully in, with Shivalaya on the top. Yeah. Om Trambakyam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukami Bandhanan Murtyormukshi Yamamrutatam. Thank you. Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Jaya Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Jaya Shri Krishna Sharanam Mama. हरे ओम महाशास्त्रशिखा पुरुषाशास्त्राक्षरशांगुलम पुरुषे भाव्यम उतामृतस्य शानु यनन्नातिरोधे एतावानस्य महिमातो जायांस पुरुषं पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अनुतन दिवि त्रिपादुर्देव उदित पुरुषं पादोस्यः भवत् पुनः ततो विकृत शासनाने अभि ततो विराय जातो विराजो अधिपुरुषं सजातो पस्मात् भूमि मथो पुरहं तस्मादग्रयात् सामान्य जग्निरे छंदागुण श्री जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः तम्रेख्री जागरमत तेन देवा अयजंत साध्य दाव्य कल्पन्न मुखत किमर्षा पापादा उच्यते ब्राह्मणों से मुखमासीत
बाहुराजन कुरुशुद्रो जायतम चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षुषुजो जायतम श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्नि जायतम नाभ्य आशीर्षिगुम शिष्णोद्यो समद भूमि तथा लोकान अकल्पन खा देवाः जगन बंधन बाधा अबंधन पुरुषम पशुमा। हम उनको प्रार्थना करते हैं कि हम उनको नहीं, वो हमें ऋण से मुक्त करें और उनका स्थान शिवलोक में प्राप्त हो, ऐसी हम भावना करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो हृदु सवाहा स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः स्वस्ति नस्तान रक्षो अरिष्टनेब्रिहिं स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातुम् ओम पयः पृथिव्यां पय औषधि खूपयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाः पय सतुः दज्जम् ओम विष्णुरराटमसि विष्णुक्षप्तुषुदुरुषिं विष्णुविष्णुवेत्ताम् ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता व्यवसो देवता रुद्रा देवता मरुतो देवता बृहस्पति देवेंद्र देवता सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाता वे नमः भवे भवानी भवाय नमः वाम देवताय नमः कुल देवताभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तुर्भवन्तु पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तुर्भवन्तु। You have to be circle around 5 times. Pradakshina kina. If anybody immediate family can do it also. यानी कहानी च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिनं सुरेश्वरी यत् प्रीतं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे तम्। ओम सहस्रशिखा पुरुषा सहस्राक्षरसाङ्गुणं पुरुषे भाव्यम् उतामृतशेषानो यननिनातिरोधिम् एतावानस्य महिमातो जायांस पुरुषः पादोश विश्वभूतानि त्रिपादश्चामृतं देवीं त्रिपादुर्भ्यो उदित पुरुषं पादोषेह बहुत पुनः ततो विकृत शासनालय अभी ततो विराज जातो विराजो अधिपुरुषम सजातो पस्पान भूमि मथपुरम तस्मात् अग्नि सामान्य जग्निरे छंदा गुंशी जग्नि तस्मात् जाता अजावयहम तबरिखि जागमतेन देवा अयजंत साध्य कल्पन्न मुखत किमशा युवा पादा उच्यते ब्राह्मणो शुभमासित बाहुराजन पुरुषुद्रो जायतम चंद्रमा मनसो जात चक्षुषुजो जायतम श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्नि जायतम नाभ्य आशीदंतर्षिगुं कृष्णोद्योः समर्थ भूमिं तथा लोकान् अकल्पयन् खादिवाः जगनन् अबन्धन बाधाम् अबन्धन पुरुषं पशुमहम् ओम जगनेन जगन्मयदन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त्यत पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसेयसाहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे क्षमे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णव दातुं कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाराज्य महाधिपत्यम समुद्रम पर्यायी अंतदा परार्धात् पृथ्वी समुद्र पर्यंतायाः एक राजति दप्य श्लोकोपिकितुमरिष्ठा संग्रहे आयुष्य देवाः सभासदिति यहाँ रख दीजिए। बहन जी धीरे से एक कोकोनट है ना नीचे डाल दीजिए। और जल से अभिषेक करना है ऐसा। गंगेश्च यमुनेश्च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरुः। Everything you have to be sprinkled on his body. ओम त्र्यंबक्यं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। दोनों भैया आ जाओ क्या रक्षणो बलगम वसूयामि रक्षणो बलगम पश्यामि रक्षणो बलगम पश्यामि। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षका भक्तानां भयं कर्ता त्रातां बाणावात् द्वै मातुर कृपा सिंधु श्यामातु गज प्रभो वरदत्वं वरम देहि वांछितम वांछितार्थम। दादाजी को हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे पूरे परिवार के साथ जो इतने साल तक जुड़े हुए हैं रहे हैं, आप हमारे हृदय में सदा के लिए हैं। ठीक है जो है ना। तो हम सभी को आशीर्वाद देना कि हमारे जो अपना जो परिवार है वो फूले फाले आयु करता पुष्टि का हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस वी वांट फ्रॉम हिम
go to that. We are not asking about heaven, which शिवलोक में आप नोती, शिवलोक में आप प्रस्थान कर रहे हैं, तो उसी में शिव जी को प्रार्थना करना कि हमें सभी परिवार को हमें आयु करता, पुष्टि करता, निर्विघ्न करता करे, और हमारी आपकी जो देखभाल में जो क्षति हो लगे हुए हैं, क्षति तो होगी। दादाजी बोलते हैं अच्छा बेटा ये लेकर आ, अच्छा मैं दादाजी आता हूँ, बाद में चले जाएंगे लंकी नॉलेज में, है ठीक है, ऐसा होता है? अच्छा आता हूँ मैं, है? तो ये सभी हमें जो क्षति है उनको क्षमापण कीजिए, और हम आप शांति से शिवलोक में प्रयाण कीजिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावमदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापद शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः सामा शांतिरेधि यतो यतः शमी हसे ततो नो अभयं कुरु शम न कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। उनके चरणों के पास में ये कोकोनट रख दीजिए। इत्येषां वाग्मय पूजा श्रीमद शंकर पादयों अर्पिता तेन दिवेशम गृहीतां परमेश्वर। और पुष्प लीजिए, और आपको पुष्प लेकर एक प्रदक्षिणा करके उनके चरणों में रखते हैं। पुष्प यहाँ है। श्री कृष्ण शरणं मम, around the circle and then after, yeah. Shri, आप भी कर सकते हैं, immediate family please. अच्छा भावात्म जो स्पीच देना है वो आप दे सकते हैं। आ जाइए हम। Hello, family, friends, and well-wishers. Thank you, everyone, for coming here and paying your respects and saying your final goodbyes to Dad. They say there is a reason. They say there's time to heal. Neither reason nor time today can express how we feel. It is never easy losing a parent. We loved him would be an understatement. We will miss him will be a greater understatement. We were very, very excited and thrilled when he decided to spend his retired life at the age of 76 and decided to move in with us in our home in New Jersey. We made many, many lovely memories with him over the years, and our bond grew even stronger. Dad
better known as Thakur Sahab, he always used to say, हम राजा हैं, राजा रहेंगे और राजा थे. हमेशा he lived life king size. Many of us will vouch for the fact that he was a very happy-go-lucky, jovial kind of a person, and he brought a smile to many of us all the time. He truly deserved the success that he enjoyed and the rich life he lived. He taught us many, many things. Most importantly, he gave us the ability to know that if you put your mind to something, you will definitely achieve it. Anything is possible, and never be afraid to give anything a go. I tried to follow his advice and tried to make something of my life. And success followed at its pace. Dad was a great friend, philosopher, and guide to us. He was an avid writer. He was just a matriculate, but self-taught himself and translated many English novels to Sindhi for our Sindhi readers. He spoke English like an English gentleman. He would always use the twang that the English gentlemen have. हम हमेशा मजाक करते थे कि अंग्रेज भाग गए, आपको यहाँ छोड़ गए. But he was an avid movie buff. We enjoyed many, many movies with him. And both my sons are his movie buddies. I would like to acknowledge my better half, Jyoti. She welcomed him home with open arms, and for him, she was always Mary Doctor Jyoti. When she took care of him, gave him his medications on time. When he was in pain, she used to massage his feet. Then she became Nurse Jyoti. When the food was great, he enjoyed the food. She is Chef Jyoti. And above all, one title that she earned is Meri Pyari Beti Jyoti. He loved her, he loved us, and we had great, great memories with him. Both my sons, Rohit and Amit, thank you for, giving all the love, support, and care for Dad, giving him food on time. Rohit, from his busy schedule, used to get up also and give him food on time, breakfast, lunch, dinner. Amit spent hours talking about movies, having a great time with him, and both of them planning for movies and going ahead without our knowledge as well. So both the grandpa and grandson had a great time, with each other. And of course, through the years, जैसे बोलते हैं, असल से प्यारा सूत है, ये दोनों अनमोल रतन उसके राम लखन की तरह. सूत उनको असल से बहुत प्यारा था. But anyways, Dad, we grew stronger as a family with you around, with your love around, your support. And Dad, we love you and we pray for you to rest in peace. Om Shanti. Yeah. I think I'm going next.
Thank you all. Thank you all for coming and for all the love and support during this very difficult time. Many of you did not have the pleasure of knowing my dad. To everyone, he was Thakur Sahab, but to me, he was my daddy. My dad is one of the strongest persons I know. Life dealt him many difficult hands, but he managed to make them all winning hands. He never complained about anything. He took every challenge thrown at him in stride and never ever complained. He never turned away from his responsibilities. Growing up, my dad worked 2 jobs to provide for us. He made sure we were never lacking for anything. Due to that, we barely saw the man growing up, and my brother Chandru had to step in as mini dad many times. I remember having my first sip of whiskey with my dad and twirling around in circles till I passed out. I can only imagine the amount of courage it took my dad to pack up the only home he knew and take 3 teenage daughters across to America after my mom passed away to be with my brother. When he came to America, he worked many jobs, and always with great enthusiasm and honesty. He always said to all of us, if you work hard, there is nothing in life you cannot accomplish. He was extremely proud of his children and all their accomplishments, especially my brother, who was always his favorite. We all tried, but we did not succeed in becoming his favorite. My father was a very humorous man. When I first started taking the subway and saw a rat on the tracks, I came home and told him about it, and he said, why didn't you tell the rat, मैं ठाकुर साहब की बेटी हूँ? And we had a good laugh about it. And then if I complained, it's very cold outside, he would say, take an umbrella, you'll be fine. As we grew up, our roles reversed, and when I would take him to the doctor, he would introduce me to them as his mother. This caused him to get many confused looks, and ultimately we all had a good laugh. I did scold him many times like a mother, and then he would turn to me and say, मैं तेरा बाप हूँ, and that was the end of the discussion. Dad's memory would amaze me as he told me stories about him growing up as a young man and taking several trains to his first job or just to go catch a movie. He actually recalled what he paid for the movies back in the day and how he would save up all week so he could go watch a movie. I really enjoyed listening to these stories as it gave me a great insight into what a great personality he was even back then. Daddy touched so many lives and helped so many people because that was just the person he was. Another trait I love about my dad is that he was brutally honest. When I visited him recently, I took him some food and he said, it lacks salt and spice. And he said, I'm not sure how Rajiv eats your cooking. He said, next time, just pick up some food from a restaurant and bring it. He always praised my sister Jaya's cooking. She was his favorite cook. She baked the best cakes for him, and I'm so happy she got to spend the last Father's Day with him in May. He loved Indian politics and was a great fan of Modi. And he often talked about everything going on in India, and I kept telling him, but you live in America, Dad. All in all, we're gonna miss you very, very much, and we're gonna miss you telling us, time hi nahi hai kuch bhi karne ka, I'm so busy. We love you, we miss you. Give Mom a hug when you see her, and until we see you soon.
I'm going to do this without crying because we all know he would be wondering why the hell we're all crying right now. So good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us today to celebrate the life of my Nana. One thing, I have so many memories growing up. I think some of my earliest memories of him is when I was a kid coming to visit the family in New York, coming from Boston and coming from Maine, and I see pictures of myself as a kid with Nana, and he was wearing his signature uniform, the gunji and the lungi. I think we all have those memories. But one thing I'm sure all the ladies here will definitely miss is how when he saw all of us, how he would greet us. It was always a flex for me with my friends that while their grandparents talked to them in Sindhi or Hindi, my grandfather came to me and said, "Hey babe, how's it going?" or "What's up, sweetheart?" So at one point I did think that these nicknames were just for me, but then when Alicia came around, I noticed that he was calling her babe too, but it's okay. I was happy to share the love and this flex, of course. I think another thing that we're all gonna miss is Nana's social media activity, in addition to all the WhatsApp forwards in Sindhi, which I promised I did watch at some point. I will definitely miss his Facebook comments on my photos. One particular one comes to mind. I posted a photo of me and my mom, and the comment that he posted was, "Beauty, bold, and brains." I think all compliments were for me. And I think I'm gonna continue to think that. I'll share one more story before turning it over to Rohit. A couple years ago, I was telling Nana about how one of my friend's grandmothers goes to a program where they pick her up, where she can socialize with other people her age. They take them to the mall to go out to eat. I asked Nana if he would ever be interested in doing something like that. He immediately shook his head and said, "What would I do with all those old people? I don't need friends. I barely like the ones I have. I'm good on my own at home watching a movie." So since then, I realized that every time I wanted to stay home instead of going out or got annoyed at my irritating friends, I had to lean into that feeling too, because after all, wanting to stay home, sitting on the couch, and watching a Hindi movie with some snacks, it's in my genes for sure. Thank you all again for joining us today. It makes us all so happy, and it touches our hearts to see how much my Nana was loved and respected. And to my Nana Roni, thank you so much for all the laughs, compliments. Love you. Hi everyone. To those who don't know me, my name is Rohit. I'm Chandra and Jyoti Bachani's eldest son, and I have the privilege of being one of Dada's grandchildren. Like my dad, like Kamni Bua, and like Manisha said, we are so very grateful to all of you who came today, so together we can honor Dada's long life and legacy. Dada moved in with us in 2016. We are blessed to have had the opportunity to spend every day of the past 6 years with him, to have supported him through ups and downs, to have learned from him, to have loved him, and to have been by his side. There's no doubt that Dada's passing leaves a void in our lives. Just as we did for him, he took care of us, every one of us, in one way or the other. He was a shoulder to lean on, a friend to rely on, and a source of strength for our whole family. So I want to tell you about some of the qualities that made my Dada truly one of a kind. Dada was a lighthearted, happy-go-lucky man. He genuinely believed in living life to its fullest, and he had a generosity of spirit and a sense of warmth that was contagious. He would often tell me and my parents and Amit, especially after a hectic workday, how important it was to stop, to try to take the time to experience the little moments in life and just appreciate the gift that life is. Because that's how he lived his life every day. He set the example. Dada was also a man of faith. He strongly believed that with faith in God, a positive mindset, and self-control,
all things were possible. He was devoted to God and to his family through his last days, and his strong spirit and his unwavering faith were a source of inspiration to every single one of us, every day. And just as important as Dada's commitment to faith was Dada's belief in the power of education. Everyone who knew Dada knew that he was extremely well-read and extremely well-spoken. He was witty. He was thoughtful. He was intelligent. You could talk to him about almost anything, and you would always come out of a conversation having learned something from him. I know I did. And this was his most admirable quality, in my opinion. He genuinely believed that education empowers people to make a positive difference in the lives of people around them. Most of all, Dada was an extremely disciplined man with an incredible sense of restraint. No matter the challenge that came his way, Dada was always in control. The past 2 years in Dada's life were challenging in light of his health complications. No matter what he was going through, none of us ever saw him complain, not once. His extreme confidence steered our family through some of the most difficult moments. Even in his last few months, even as we were checking in on him, his concern was how we were doing. That to me says volumes about his character and his spirit. While he may no longer be with us in person, Dada will be with us in spirit. The impact that he had on the people around him, the lives he touched, and the memories we all made with him, they'll never fade. Those memories, I can proudly say, will be everlasting. And that's how I think Dada would want us to remember him. Calm, composed, happy-go-lucky, witty, and full of a sense of passion for his life above all else. I also want to take a moment to acknowledge my dad. It's not easy for any son to see their parents suffering. It's definitely not easy to accept the reality that their parent is no longer with us. Through the past few years, the past few months, and especially the past few days, my dad's grace, firm belief that we will get through this, and unconditional love for Dada and our family have been a constant source of strength for us. Dad, you are a dutiful and devoted son, an amazing father, a tremendous husband, and loving brother, and I want you to know that we're proud of you. And I know that Dada was proud of you too. And to my buas, I'll say that Dada loved you more than words can ever describe. You were always in his thoughts. He cared for you deeply and was incredibly proud of you. And I know he's watching over you. We love you. May Dada's soul rest in peace. May his legacy live on. And may he watch over all of us. He will be dearly missed. Thank you. Hello, everyone. For those of you that don't know me, my name is Amit, and I am Thakur Saab's youngest grandson. मैं बस उनके बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ and how much he meant to me. If you knew him well, then you knew that Dada was a man of few but very impactful words. वो ज़्यादा करके आज तक न्यूज़ और अपने हिंदी सीरियल शोज़ में बहुत खुश रहते थे. He had an unquenchable curiosity about the world and to be well informed. I always admired that he loved life and he tried to live each and every day fully as best he could. जब भी कोई उनसे मिले और उनसे पूछे कि ठाकुर साहब दादा कैसे हो, he'd always reply one thing to me. वही बेटा, resting is besting. His sense of humor was always his best quality. Genuinely, he was one of the funniest and wittiest men I've ever come across.
Dada was many things, but most of all, he was an immaculate man. He was a true gentleman and someone who knew how to treat his guests well and live life king-sized. वो बहुत शान के साथ रहते थे. At 85 years old, Dada had a passion for life that many people go through their entire life without discovering. About time laga, but I promised myself to be strong today because I knew he wouldn't want to see me upset or see us devastated at the thought of having to carry on without him. And because he lived a life worth celebrating, he'd want us to remember him with a smile. You know, even on the days where he'd feel frustrated या वो थोड़ा नाराज होते थे that उनकी तबीयत खराब थी this year, traveling back and forth between hospitals with Dad, I never once saw him lose his cool. He never wanted to bother anybody. वो हमेशा एक smile और एक confidence के साथ चलते थे. जितना डर हमें लगता था उनके हेल्थ के लिए, उससे कई ज़्यादा विल पावर और स्ट्रेंथ के साथ वो चलते थे. जब भी आप उनसे पूछो, वो मुझसे कहते थे कि वो हमारे दादा है, and that was enough for him to fight through it all. He tackled every single challenge this past year and in life with a smile. और हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए. There are many great things that I'll remember about Dada, and the biggest was how he expressed his love. वो ज़्यादा करके I love you नहीं बोलते थे, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, वो बस दिखाते थे हमें. एक स्कूल से आता था तो वो हग देते थे या मेरे शोल्डर पर ऐसे टैप करते थे, और जब भी मैं बहुत टेंशन में होता था ना स्कूल से, वो अपना हाथ इधर डाल के स्क्वीज करते थे just to see how tense I was. I also never had to tell him that I reached home. उनको बस पता था मैं घर पहुंच गया. His eyes would always search for me in the room. He'd always ask things like, you know, मेरा हीरो कहाँ है, मेरा एक्टर बेटा कहाँ है, रोहित अभी भी काम कर रहा है क्या, तुम दोनों ने लंच तो खाया ना. And that was how he was. He was always unconditional in his love and affection for everyone. जिससे भी मिलते थे प्यार से मिलते थे. He was my movie buddy. He was a very insightful guide to the four of us whenever we needed it. And above all, he was just an amazing grandfather who cared for us unconditionally. And he was there when we had the smallest of problems. Zindagi mein na, their grandparents and then hamare dada the. And as much as it pains the four of us to say goodbye to him so unexpectedly, I'm really damn grateful he had a life well lived and that we had the time that we did with him. Very few people on this earth have a life as rich and as fulfilling as Dada's, always surrounded by his family and friends जो उन्हें इतना चाहते थे. I thank God that I got to know you in this lifetime and get your blessings. I hope आप जहाँ भी हो, आप हमेशा खुश रहो, and that I can just do my best to make you proud for the rest of my days. I love you, and I'll always miss you. Thank you. मुझे पता है दादा के सारे दोस्त या दूसरे रिश्तेदार भी आए हैं, so if you'd like to say something, please, you could share a few words. My sister Bina and my nephew Sahil could not be here from India, but I wanted to just share some words they had. Sahil and my dad called each other Habibi. So Sahil says, Habibi, there are no words to express the loss. My sister said, my fine dad was busy working hard and living on his own terms. He didn't chase money to build assets. He said, when I go, you siblings won't have anything jaidad to fight over, so I'm not gonna work that hard. She loves him, of course, and she misses him, and we all love you, Dad.
Namaskar. Good afternoon. First, I just want to offer my sincere, heartfelt condolences to the Bachani family. It's very difficult doing what I do as a funeral director, but when it comes close to home, and I have a dear friend like Jyoti and Chanda, it is very difficult. So I just want to offer my sincere prayers to your entire family. I've always watched all of the pictures. I was not blessed to meet Dada, but I would have been honored. And I'm honored to be here for you and to guide your family through this and to have been there when you called me. So I just want to say thank you so much for placing all of your trust in me and allowing me to take care of such a beautiful man and grandfather, father, and uncle. It is truly an honor. Thank you. At this time, I want to thank Maharaj Nayan Pathak. Thank you so much for your prayers. Always do everything so nicely. So thank you so much for being here today to guide the family through prayer. And also, I just want to thank everyone who came to show support to the family. It is greatly appreciated. Clearly, your family is loved because there are so many people here today. And I just want to thank all of you also for the patience with the parking. And, this is a cozy little chapel. But usually when I tell families, when there's so much support, it really makes them feel loved. So you being here today really helps make everything seamless. So thank you so much for your patience with parking in the chapel. I will give everyone the opportunity to come forward for darshan. The immediate family will go last, so I will ask that if the family wants to come to the front, and that way we can kind of circulate around, but I would ask that we start on this side. So if we can start making our way this way a little bit, just give us a little bit of time to organize everyone. The family will process to cremation in Old Bridge. We will be going to Liberty Grove. It is a very small crematory. The parking is non-existent, to say the least. It is a very small facility, and it's just for cremation. So I just want to give everyone and make everyone aware of that. So if you are not traveling to the crematory, we try to ask that you come forward first so that when you take leave, it makes it easier for the family to leave. And we do have an arrival time at approximately 3:15 there. So we want to give everyone the opportunity to come forward to pay their final respects and briefly greet the family. And also give them a private moment at the very end. So once you have come up for darshan and greeted the family, we ask that you can continue to your cars. That way they can have a private moment themselves. Thank you so much. My prayers are with you. May his soul rest in peace. And Jyoti, thank you. Oh, this is ours? I think that's yours. These are yours too. Thank you so much. She's gonna. She's like. Do you want the camera closer so that way people can?
All of us, immediately. Everybody take the flower. Om Ano Vajraha Kratavayanto Vishado Dabdasho Aparayasho Ommidaha Devano Yatha Sadabinda Vruddhaim Prasanna Prayo Rakshitaro Dive Dive Om Purnamada Purnamidam Purnat Puryamadachate Purnasya Purnamadaya Purnam Evavashishyadahim Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavamadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Om Dyoho Shanti Antarikshagam Shanti Pruthavi Shanti Rapadaya Shanti Roshadaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishwe Deva Shama Shanti Redi Yato Yata Shami Hashe Tatono Abhayam Kuruhum Shamna Kuru Prajabhyam Bhayam Nah Pasubhyaha Om Shanti 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 Om Jagrena Jagramaganta Devahastani Dharvani Pratmanya Ashanna Dehanakam Mahimanaha Sachantyata Purvim Sadhyaha Shanti Devaha Om Raja Dirajaya Prasaya Sahinim Namo Vayam Vaishnavaya Kurmahe Same Kamana Kama Kamaya Mahyam Kameshwaro Vaishno Dayatum Kuberaya Vaishnavaya Maharajaya Namam Om Swasti Samrajyam Bhojyam Swarajyam Vairajyam Parmeshyam Rajyam Maharajyam Adhipatyam Em Samandam Paryahim Antada Prardat Prithvi Samudra Paryantayaham एक राणिजित दपेश श्लोक अभिगीत मरिष्ठावसन गृहे आविष्य देवाः सभा सदैतिहिं ओम विशद चक्षुर्द विशदोर्मुखो विशदोर्बाहुपादं संबाहुभ्यां जनन्य देवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको एक बात प्रदक्षिणा करनी है और छोटे बेटे को दे देना है। He can escort you. तानि कानिच पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे ओम अग्नये ऐसे नमः स्वाहा इदम अग्नये ऐसे नमः। And now you have to be go around the circle and not move. Yeah, okay. Around the circle you have to go, and then after you have to stand there and not move. Your face, okay. Go ahead. अच्छा चंद्र द्वितीय न दवाई तो चंद्रमा में सो जाता चक्षु सूर्य हो जाता जो रख दीजिए और ये ग्लासेस से निकल दीजिए और किसी को टॉयलेट कर दीजिए। Whatever you like. Yes, okay. द्वितीय न दवाई तो चंद्रमा में सो जाता चक्षु सूर्य अजायता श्रोता प्राणस्य मुखाग्नि जायता। This is the last और वहाँ हम अंत्येष्टि करेंगे। ओम शांति शांति शांति। अच्छा किस are you going to keep it this one? You have to be. I'll take it this small one. Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram
Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Ramo Rajamatim Sada Vijayate. Ramo Ramesham Bhajet. Ramanam Charitarthar Sabala. Ramo Ramesham Bhajet. Okay, we'll ask the men that are ready to lift and transfer to the cart, which is right behind you. I'm gonna move this over. One, two, three. Right there, place it down. Now, the head should come down first. Yeah. And you have to invoke that, you have to escort the car. And don't move. Okay? Ramo Rajamatim Sada Vijayatim. Ramo Ramesham Bhajet. Ramanam Charitarthar Ramo Ramesham Bhajet. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Thank you. Yeah, I got it. We go direct for ours, because we have an arrival time, so we have to move a little bit. Four, no? We need more because we're gonna carry through here. Usually the tradition is
Yeah, Daddy.